the reactions are studied, and in the reactions the different speed of the reactions are studied. ठीक है, तो आप अगर किसी भी reaction को हम लोग कहते हैं कि हम reactions के बारे में study कर रहे हैं ना, what do you mean by this? To study about the reaction means here we are studying about the velocity or the rate of the reaction or the speed of the reaction. Okay, and along with the speed of the reaction, the mechanism of the reaction is also studied in the chemical kinetics. Now, mechanism means the different reaction intermediate products which are formed during the course of a reaction, during the duration of a reaction. ये सारी चीजें भी chemical kinetics में study की जाती हैं. Okay? So, in this case, generally, the reaction can be categorized into three categories. Basically, we have the three different categories of the reactions or three different types of the reactions. So three broad categories of the reactions are there. Instantaneous reactions are the reactions which are taking place in a very faster way, which proceeds very faster. Next, we have the very slow reactions, the reactions which takes long period of time for the completion. And the third type of the reaction is the moderate reaction. Okay, so these are the different categories of the reactions. Now, instantaneous reaction means the reaction which takes place instantaneously. Immediately, as soon as we mix the reactant, we mix the two substances, the reaction proceeds, okay, without wasting any time. Okay, so this instantaneous reaction takes about 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 seconds. So we can imagine how fast this reaction proceeds. For example, if we take the silver nitrate and sodium chloride NaCl, and when we mix these two substances, these two chemicals, then immediately there is a formation of the product, that is the silver chloride and sodium nitrate, and there is no need to provide any external energy for the proceeding of the reactions. ठीक है, तो इस type के reactions जो होते हैं, that reactions are instantaneous reactions, or we can say that the very fast reactions. Now, next category of the reaction is a very slow reaction. Class representatives, start sharing the PDF. Ravish Gautam. So next we have a very slow reaction, and this slow reaction takes a very long time for completion, and sometimes it completes in few days, few months, few years. ठीक है? So इस टाइप के जो reactions होते हैं, these reactions are very slow reactions, and हम लोग अपने आसपास भी slow reactions को देखते हैं, जैसे rusting of iron है, and in the rusting of iron means the iron get decomposed, the block of iron get rusted when it is kept in the open environment. Okay, so जैसे when we leave the iron in the environmental conditions, that is in moisturous conditions, in presence of carbon dioxide, different types of gases are present, water molecules are also present in the environment. So in that condition, the iron block get rusted, means the iron block slowly get degraded. ठीक है, there is a degradation of the iron, and ये जो हमारा degradation होता है, orange color, somewhat orange color powdered form में convert हो जाता है, that is the rust which is present on the surface of the iron. Or degradation or decomposition of the plastic or the polymer, है ना? When we purchase a bottle from the market, तो हम लोग क्या देखते हैं, that bottle is new, its surface is shiny, okay? But after some time, when we use that bottle for a long period of time, then its surface get roughened. उसका surface क्या है, rough हो जाता है. जो ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंट नेचर जो होता है बॉटल का, that gets ruined. ठीक है, वो हमारा ओपेक में कन्वर्ट हो जाता है. So these are the example, rusting of iron or degradation of the polymer. These are the examples for a very slow reactions, and it is very difficult to determine the speed of such type of reactions. तो अगर हमें speed find out करनी है, तो fast reaction की speed भी हम लोग determine नहीं कर सकते हैं, and very slow reactions की speed भी हम लोग determine नहीं कर सकते हैं. ठीक है. Now next type of the reaction, that is the last reaction, is the moderate reaction. Now moderate reactions का मतलब होता है कि there are some reactions which occurs in a measurable time period.
ठीक है, एंड इनकी स्पीड्स को हम लोग इजिली मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल the inversion of cane sugar or hydrolysis of ethyl acetate. Okay, so in the hydrolysis of the ethyl acetate reacts with the water and there is a formation of the acid and the alcohol. Okay, so ये जो हमारे reactions होते हैं, these reactions are the moderate reactions whose speed can be easily measured. Okay, तो जो moderate reactions होते हैं, that are the main category of the reactions which is studied in the chemical kinetics. Okay, so अगर हमें फास्ट रिएक्शंस को या स्लो रिएक्शन को स्टडी करना है, देन वी ऑल्टर्स देयर स्पीड, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं एंड उसके बाद हम लोग उसके काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं. जैसे कोई रिएक्शन बहुत स्लो है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके रिएक्शन रेट को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एडिंग सर्टेन सब्सटेंस दैट इज नोन एज द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना. बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है. यस मैम. यस मैम, सुने. So one of you start. Ravish Gautam present है? रवीश गौतम इशू है मैम. नेटवर्क इशू है. यस मैम. ठीक है, कोई बात नहीं. तो बेटा आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए. व्हाट्स योर रोल नंबर 39 पूनम. यस मैम. द पीडीएफ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है. So Okay, ma'am. this is the okay. Start sharing the PDF. So this is a moderate reaction which is studied in the chemical kinetics. So next we comes to the what is the purpose of studying the reactions. So in the chemical kinetics we study the speed at which the molecules interacts under certain conditions. Okay. So the favorable conditions are provided to the reactant molecules and these reactant molecules interact with themselves and they are converted into the product. So हम लोग यहाँ पर ही study करते हैं. Now here along with this the speed as a concentration function of the reactant is also studied, and when certain conditions are changed then how the molecule reacts, how they interact, this is also studied in the chemical kinetics. Okay. And the next thing is that here the reaction rate which controls certain factors, means if we change the rate of reaction or a speed of reaction, then what are the different factors which controls the reaction rate. किसी भी reaction को control करने के लिए, उसकी speed को change करने के लिए, alter करने के लिए हम लोग उसके factors को change करते हैं. Sometimes we change the temperature or sometimes we change the pressure, sometimes we change the concentration of the reactant, है ना. These are the different factors which are altered during the course of the reaction. And along with this we also studied the mechanism through which the reactant molecules are transformed into the product. So in a reaction, when the reactant is converted into the product, the chemical bond is present. By how the molecule is formed? The molecule is formed by the reaction between the atoms and which are joined with the help of a chemical bond. Certain type of bond is present. Okay. So in this case, because of this chemical bond, chemical reactions, the molecule reacts and they are converted into the product. So during this course of reaction, the old bond is broken and new bond is formed. Okay. So during the breaking of the bond, the intermediate species is formed. And this species, which type of intermediate species is formed, how many steps, in how many steps the reaction proceeds. So ये सारी चीजें chemical kinetics में study करते हैं. Is that clear? So yes, in the chemical kinetics, first we take the rate of reaction. Now what is the rate of reaction? Now the rate of reaction means here the quantity of the reactant species which is consumed, means the reactant which is consumed or the product which is formed during the time period, during a given time period in a chemical reaction, that is known as the rate of a reaction. Okay? That is known as the speed of a reaction. It means कि अगर हम लोगों ने जैसे अभी हम लोगों ने different types of reactions पढ़े, that is moderate reaction, fast reaction, slow reactions. Now यहाँ पर हम लोग कैसे कोई रिएक्शन फास्ट है, कोई रिएक्शन स्लो है या कोई भी रिएक्शन हमारी मॉडरेट रिएक्शन है, कैसे डिटरमाइन करते हैं? वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट.
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड मेजर करते हैं कि कितने टाइम पीरियड में रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वी से दैट देयर इज द कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। तो किसी भी स्पीड को, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को मेजर करना है तो उसको हम लोग रिएक्टेंट के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट के टर्म्स में मेजर करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन अ गिवन यूनिट टाइम, ठीक है, और द कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ गिवन यूनिट टाइम. So this consumption of a reactant or the formation of the product indicate the speed of a reaction. Now for example, we have a reactant A and this reactant A is converted into product B. अब हमें speed of a reaction लिखना, rate of reaction. Then how we write the rate of a reaction? Rate of a reaction हम reactant के terms में भी लिख सकते हैं और product के terms में भी लिख सकते हैं. यहाँ पर हमारा reactant क्या है, A है, और product क्या है, B है. यानी कि A जो है it is converted into B. ठीक है. तो when we write the rate of reaction in terms of reactant, यहाँ पर हमारा क्या है, जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता जाता है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा. ठीक है. तो उसको हम लोग डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, माइनस साइन. तो जब रेट ऑफ रिएक्शन में when we write the rate of reaction and in that case if the minus sign is written, it means that particular is written for the reactant. Okay, it is related to the reactant. तो यहाँ पर rate of reaction के लिए minus delta constant square bracket and this square bracket is related to the concentration of A, delta T with small change in the concentration of time. It means small change in the concentration of A with स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम. हो सकता जैसे हमारी रिएक्शन जो है 1 आवर की है तो स्मॉल चेंज यानी कि कितना हमारा 5 मिनट्स में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 5 मिनट्स में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है इन अ 5 मिनट्स. ठीक है. तो ये डेल्टा टी जो है इट इज इंडिकेटिंग द गिवन टाइम, जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग रिएक्शन को स्टडी करते हैं, रिएक्शन को मेजर करते हैं, देखते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा टी और इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल चेंज in the amount of time. Okay, so it is equal to decrease in the concentration of A, that is the reactant, upon time taken. Okay, अगर और if we write it in terms of product तो हम लोग किस साइन से, प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे and rate of reaction is equal to plus delta concentration of B square bracket में upon delta T. ठीक है. ये हमारा प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है. सो स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, दैट इज द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन. इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ graphically if we want to represent the rate of reaction then it can be represented by plotting a graph between the concentration versus time. अब यहाँ पर concentration में हम लोग प्रोडक्ट की concentration को भी मेजर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और रिएक्टेंट की concentration को भी स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा क्या है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा. यहाँ जो ग्राफ है विच इज डिक्रीजिंग, द कर्व विच इज डिक्रीजिंग shows the concentration of the reactant. And in the graph, the curve which is increasing, the line which is increasing shows the concentration of the product. So as the time passes, the concentration of the product increases. Okay? Is that clear? So in this case, initially, hello. So initially when the reaction proceeds, that is A is converted to B, तो at zero time interval अगर हम लोग अमाउंट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, जैसे A को हम लोग ने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है, this amount of A is taken, this A amount of reactant is taken, और इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है वहां पर टाइम इक्वल टू 0 है तो हमारा B का अमाउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है.
and at t equal to t, मतलब t is representing a certain time period, 5 minutes के बाद, 10 minutes के बाद, जितना अमाउंट ऑफ हमारा b का फॉर्मेशन होगा, जितना b बनेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, और रिएक्टेंट के लिए हमारा क्या, प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, तो हाउ वी राइट, डेल्टा x। अब ये dx का मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? Yes. Now, for a general reaction, if we write a simple general reaction, that is A plus B reacts and they are converted into the product C and D. Ab small a means the small a is representing the number of moles of A or the number of molecules of A which is taken in a reaction. Small b is representing the amount of B taken in a reaction. Small c is representing the amount of C taken in a reaction. And the small d is representing the amount of D taken in a reaction. तो ये हमारी जो reaction होती है, this type of reaction is known as the it is a stoichiometric reaction where the amount of reactant molecule is also measured for balancing the reaction, ठीक है। So ये हमारा general reaction है, and in this case the rate of a reaction is given by rate equal to -1/A. तो ये हमारा कोएफिशिएंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि it is indicating the concentration of the reactant, okay. So -1/A, small change, or D concentration of A with respect to time, -1/B, ये हमारे A और B किसके लिए है, this is for the reactant, and C और D is for the product, ठीक है। So when we write for the product, हम लोग प्लस साइन लिख भी सकते हैं और प्लस साइन नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। बट फॉर द रिएक्टेंट, अगर आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिकेट द साइन, माइनस साइन लिखना जरूरी होता है, ओके। लेट्स सी एन एग्जांपल, देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, one molecule of nitrogen reacts with 3 molecules of hydrogen, and there is a formation of 2 molecules of ammonia, okay. So for this, when we write a rate of reaction, that is rate equal to minus, अब ये 1 molecule of nitrogen है, तो सिंपल हम लोग लिखेंगे small change in the concentration of the nitrogen molecule with respect to time equal to -1/3. अब 1/3 हमारे किसके लिए है, this is for the hydrogen molecule, okay, how we are representing. So यहाँ पर small change in the amount of hydrogen molecule with respect to time, and 1/2 small change in the concentration of the ammonia with respect to time, okay. So this is how we represent a rate of reaction for a particular reaction. इतना क्लियर है आप लोगों का? Now next PDF please, आगे फॉरवर्ड करो बेटा इसको। Now after that we comes to the factors which affect the reaction, okay. We have studied the types of the reactions, how many types of reactions are there, and during the course of a reaction, जब कोई भी reaction proceed करती है, then there are certain factors which affect the rate of the reaction. Now the factors affecting the rate of the reactions, in this case it includes the effect of concentration of the reactant, then effect of nature of the reactant, effect of catalyst, effect of surface area, effect of temperature, and okay, all these are the important factors which affect the rate of a reaction. Now first we will study all these factors one by one. So first we take the effect of concentration of the reactant. Now for the concentration of the reaction, जब कोई भी chemical reaction proceed करती है, that is during the course of a chemical reaction, then it is affected by, influenced by the number of collisions taking place per second between the reactant molecule, okay. So for the concentration of the reactant, when the large amount of the reactant is present, then the collision per second per rate increases, okay. जैसे if we have a room, and in that room when only one person is present, then there is no noise, okay. And when we increase the number of persons, second,
when we increase the 1 से हमारा person जो है वो 2 हो गए, 3 हो गए, people number of peoples increase कर रहे हैं. जैसे जैसे number of peoples increase करते जाएंगे, the noise in the room also increases. ठीक है, तो हमारा क्या है कि noise जो है वो क्या किसके ऊपर depend कर रहा है? The number of peoples present in a room. Okay. In the same way, the collision between the molecule depends upon the concentration of the reactant molecule. यानी कि reactant molecule का amount जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा collision होगा between the reactant molecules and उतना ही ज्यादा reactant molecules जो हैं they are converted into the product. Okay, so the rate of the when the large number of reactant molecule is converted into the product, it means the speed of a reaction is also fast. Okay, so the rate of the reaction depends upon the effect of concentration. It means greater the number of higher is the concentration of the reactant, higher will be the greater will be the speed. Okay. Now next we take the nature of the reactant molecule. Now generally the reactions involves the rearrangement of atoms between the reactant molecules which is converted into the product. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि when the reaction takes place, in that case the reactant molecule is converted into the product, and during the course of a reaction there is a breaking of the old bond and the formation of a new bond. So when the old bond is broken, it means the reactant molecule is start converting into the product. Okay? So there is a breaking of the old bond and formation of the new bond, and this nature and the bond strength in a reactant molecules are greatly affected by the rate of conversion of the reactant into the product. It means that stronger is the bond, large amount of greater is the time period, and the rate of reaction is slow. ठीक है, बॉन्ड हमारा बहुत ज्यादा वीक है, मीन्स वो रिएक्शंस हमारा क्या हो जाएंगे, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी दे आर, मतलब वो हमारे इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस पे आ जाएंगे. द बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन एंड द रिएक्टेंट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्ड. तो लेसर द बॉन्ड अरेंजमेंट, फास्टर इज द रिएक्शन. बॉन्ड रीअरेंजमेंट लार्जर होगा तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो. ठीक है, सो हियर जनरली जो हमारे सिमिलर रिएक्शंस होते हैं दैट इन्वॉल्व्स द डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट रेट अंडर सेम कंडीशंस. ओके, सो यहाँ पर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में है कि रिएक्टेंट में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी है उसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा है, इसके ऊपर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. इतना क्लियर बेटा आप लोगों का? नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द कैटलिस्ट. So when we were discussing about the moderate reactions, about the slow reactions and about the fast reactions, at that time we have also discussed that if we want to change the speed of reaction, then we add a substance in a reaction, है ना. और ये जो हमारा substance होता है, that substance is a catalyst. So catalyst can increase the rate of reaction or it can decrease the rate of a chemical. यानी कि कैटलिस्ट हैज अ पावर टू ऑल्टर द रिएक्शन, ऑल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सो इट ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अगर हमारी बहुत फास्ट रिएक्शन है तो हमें ऐसे कैटलिस्ट चाहिए होगा जो उस रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर दे. ठीक है, एंड इफ द रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो देन वी नीड अ कैटलिस्ट व्हिच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. सो कैटलिस्ट ऑल्टर्स द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ओके, clear, right? So for example, when there is a reaction between the hydrogen molecule and the water molecule to form hydrogen and the oxygen to form a water, this type of reaction is a very slow reaction at ordinary temperature. But when this reaction takes place in presence of a platinum, then the reaction rate become faster. तो जिन catalyst की वजह से reaction rate fast हो जाती है, that reactions, that catalyst are the positive catalysts. ठीक है, and जिन catalyst की वजह से rate of reaction slow हो जाती है, the catalyst which inhibits the rate of reactions, that reactions are the negative catalysts. Is that clear? Now next factor is the temperature. Now temperature plays very important role because rate of reaction is directly proportional to the temperature. It means when there is change in the temperature,
according to the change in the temperature, the rate of reaction changes. Means when we increase the temperature, the rate of reaction increases, and when we decrease the temperature, the rate of reaction decreases. For example, in the oxidation of the iron or the coal, it is this process is very slow under ordinary temperature. Room temperature पे reaction हमारी बहुत slow proceed करती है, but जब हम लोग उसके temperature को increase कर देते हैं, then this reaction proceeds in a faster way. Okay. So generally the rate of reaction होती है that every 10 degree increase in the temperature, the rate of reaction doubles or triples, becomes 2 times or 3 times. जैसे आपने 20 डिग्री टेम्परेचर है एंड 10 डिग्री आपने इंक्रीज कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी कभी कभी कुछ रिएक्शंस में 2 टाइम्स हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है, और कभी कभी कुछ रिएक्शंस में 3 टाइम्स इंक्रीज करती है. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके. नाउ नेक्स्ट फैक्टर which affects the rate of reaction is the surface area of the reactant. Effects of the surface area of the reactant. Now, surface area of a reactant is very important for a chemical reaction. Generally, this effect is seen in the heterogeneous reactions, and this surface area is also directly proportional. Rate of reaction is also directly proportional to the surface area of a reaction. Now, it has a significance if the reaction is heterogeneous in nature. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, when we increase the surface area, the rate of reaction increases. For example, if we take a large piece of a wood and we want to burn that piece, then it will take time. है ना, आपने एक बड़ा सा wood का piece लिया है, उसको आप एक साथ burn करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सिंगल पीस का जो सरफेस एरिया होगा that is less in comparison to small pieces. So that wood will take time to burn, and if we cut that wood into small pieces and then we burn that wood, then it burns with a very less time period. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है कि जब आप किसी भी चीज को, जब वुड को आपने पीसेस में कट कर दिया, then each piece has its own surface area, and when we combine when we combine the surface area of the all wooden pieces, then that it is greater than the single wooden piece. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, small pieces surface area is larger in comparison to the single large piece, and greater is the surface area, faster is the rate of reactions. Okay, clear है बेटा इतना आप लोगों का? हेलो, आवाज आ रही बेटा मेरी? Yes, ma'am. Now, after the surface area of a reactant, next important factor is the effect of nature of the light. And effect of nature of the light means sometimes subtle lights affects the rate of reaction, enhances the rate of a chemical reactions. Okay. So यहाँ पर this type of reactions जो होते हैं, they are generally the photochemical reactions. Photochemical reactions means the reactions which proceeds in presence of light. Okay. For example, the reaction between the HCl, मतलब hydrogen molecule, and the chlorine molecule takes place in presence of sunlight. So this reaction is an example for the photochemical reactions. Photochemical reaction means the rate of reaction increases in presence of the electromagnetic radiations. So it can be ultraviolet light, it can be higher radiation, it can be visible light, anything. जिस पर्टिकुलर लाइट के प्रेजेंस में, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. जैसे क्लोरोफिल फॉर्मेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, दैट आल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके. यहाँ पर हमारा क्या है, व्हेन द सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट, देन द रिएक्शन रेट बिकम्स स्लो, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द रिएक्शन रेट इज फास्टर. Reaction rate faster होने का मतलब क्या है, the formation of the food, the formation of the carbohydrate. How the carbohydrate is formed? The carbohydrate is formed by the reaction between the carbon dioxide, oxygen and water molecule in presence of sunlight. Photosynthesis process. So photosynthesis process is a type of
a photochemical reaction which takes place in presence of light. Is that clear? So all these are the examples for the, all these are the different factors which affects the rate of a reaction. Now next we comes to the velocity or rate constant. Now this velocity or rate constant, velocity means the speed of reaction, ठीक है? So this velocity or a rate, जब हम किसी भी reaction को लिखते हैं, represent करते हैं, that is when the reactant is converted into the product, then we write the concentration of the reactant and the concentration of the product, ठीक है? And here we are writing the molar concentration को आप represent कर रहे हैं, तो उसके amount को भी represent करोगे, and for that we write the molar concentration of the reactant and molar concentration of the product with respect to time, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप product के respect में लिख रहे हो तो हमारा क्या हो जाएगा? If the product is represented by x, तो हम लोग क्या लिखेंगे? Small change in the concentration of the x with respect to time is equal to, is directly proportional. देखो जब आप रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इट मींस रिएक्टेंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा. एंड एज द टाइम प्रोसीड, व्हेन द रिएक्टेंट, स्टार्टिंग में क्या होता है जब रिएक्शन प्रोसीड कर रही होती है इन दैट केस, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज फास्ट. स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्ट क्यों होती है? क्योंकि वहां पर रिएक्टेंट का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है. But when the time proceeds, the reactant is consumed, it is converted into the product and less amount of reactant is left. Okay? तो धीरे धीरे जब टाइम आगे प्रोसीड करता है, when the time passes, the rate of reaction becomes slow. Now, at the later time period, why the rate of reaction is slow? Because the amount of reactant is less. Okay? So for this, we write the small change in the concentration or the amount of the product with respect to time is directly proportional to the concentration of the reactant. अब ये जो proportionality sign है, that proportionality sign is replaced by small k. Okay, and this small k is known as the rate constant. Okay, so ये हमारा क्या है? Rate constant or the velocity is the rate of reaction when the molar concentration of each reactant is unity. Unity मतलब हमारा क्या होता है? 1, है ना? तो small rate constant हमारा कब आएगा? The rate of a reaction when the amount of each reactant is unit, and it is also known as the specific reaction rate for a particular reaction. तो rate constant जो है, it is always different for different reaction. कभी भी दो reaction का rate constant same नहीं होता है. And if the two reactant has the same rate constant, it means that the reactions are same. They are not different. Okay. So unit of the rate constant, and the unit of the rate constant is given by mole per liter is the concentration unit. Per second is the time. Okay. तो अब किसी भी इक्वेशन पे रेट कांस्टेंट की यूनिट को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या है, अमाउंट जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन की यूनिट को आप लिखेंगे मोल पर लीटर. हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन अ लीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड कितना है? इज दैट क्लियर? हेलो. Yes, ma'am. Now next we come to the molecularity of reaction. What is molecularity? ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, 12th क्लास में पढ़ा है ना केमिकल काइनेटिक्स? Yes, ma'am. बताइए मोलिकुलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो इसका पीडीएफ बेटा हमने सेंड नहीं किया, हम सेंड कर देंगे मोलिकुलरिटी को. ठीक है, मोलिकुलरिटी मींस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मैम.
number of reactant, number of atoms or molecules which colloid with each other, and number of reactant or molecules which colloid together, and at the same time for the reaction to occur. ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, molecularity, or we can say that the equal number of molecules, atoms or the ions of the reactant used in forming a activated complex as the sum of the number of molecules of various reactants that take part in a chemical reaction. It is represented in a balanced chemical equation. Okay? Or we can say that the molecularity of a reaction means the number of in a simple language we say that the number of reacting species. अब species में molecules भी आ जाते हैं, ions भी आ जाते हैं, atoms भी आ जाते हैं. It can be anything which colloid simultaneously to bring about a chemical reaction. For the chemical reaction to take place, the reactant molecule colloids, and this collision takes place simultaneously unless the reaction proceeds, or unless the whole time period of a reaction. So molecularity depends upon it can be 1, it can be 2, it can be 3. It means how many number of reactant molecules are taking part in a reaction and they are converted into the product. That is the molecularity. So 1 का मतलब क्या है, 1 reactant molecule is converted into the product. 2 reactant का मतलब है 2 reactant molecules are converted into the product. 3 reactant का मतलब है 3 reactant molecules are converted into the product. So molecularity को हम लोग कैसे represent करते हैं, unimolecular means molecularity 1, bimolecular molecularity 2, 2 reactant are converted into the product, or trimolecular 3 reactants are converted into the product. ठीक है, तो on the basis of the number of reactant molecules we can categorize the molecularity in a different categories. Okay. For example, the decomposition of hydrogen peroxide H2O2. So here 1 molecule of hydrogen peroxide decomposed into 1 molecule of water and half oxygen. Okay. So this is the molecularity. इसकी PDF में send कर दूंगी. Now next we have the order of reaction. Now order of a reaction means the total number of reacting species whose concentration changes during the course of a chemical reaction. अब यहाँ पर हमारा molecularity में भी यही था कि total number of reacting species simultaneously colliding with each other during the course of a chemical reaction. अब यहाँ पर क्या था, in a molecularity the collision was taking place, but it is not necessary that all of the reactants are converted into the product. ठीक है, अब यहाँ पर order में हमारा क्या होता है कि कितने reactant molecules जो हैं वो product में convert हो रहे हैं. That is the order of the reaction, or it is the sum of the concentration terms which determines the dependence of rate of reaction. जैसे हम लोग बोलते हैं first order reaction, zero order reaction, second order reaction. First order reaction का मतलब क्या हो गया कि 1 reactant molecule is converted into the product. Second order reaction means 2 reactant molecules are converted into the product. Okay, so order is slightly different from the molecularity. So in the molecularity, it is equal to the number of molecules of the reactants which take part in a single step of a chemical reaction. And order का मतलब हो गया the sum of the power of the molar concentration of the reactants in the rate law. Okay. So molecularity is a theoretical concept. हमने reaction देखा, कोई reaction लिखी हुई है हमारे सामने, उसको हमने देखा और उससे हमने बता दिया कि इसकी molecularity 2 है या 1 है ना, कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 molecule is converted into the product or 2 molecules are converted into the product. तो इससे हम लोग देख करके बता देते हैं. Now order of reaction is a experimental value. जब आप किसी भी reaction के experiment को conduct करोगे
उसके बाद आप उसके रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद आप उसके ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड molecularity is determined or find out theoretically. Okay, so molecularity is always in whole number and order can be whole number, it can be zero, it can be in fraction. So first order reaction, zero order reaction और fractional value भी हो सकती है, half order reaction ना, ये भी हो जाता है हमारा. Okay, so this molecularity can be obtained by a single reaction. एंड ऑर्डर को हम लोग कभी भी सिंगल बैलेंस इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं अनलेस अंटिल द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड. इतना क्लियर है आप लोगों का? Yes, ma'am. So here we have to study the equation rate for the different order reactions, that is the kinetic equations for the different order reactions, for the first order reaction, for the second order reaction, for the zero order reaction. Okay. Now before studying the rate equations for the different order reactions, next is the, कभी कभी आप लोगों ने सुना this reaction is a pseudo reaction, pseudo molecular reaction. What do you mean by pseudo? हेलो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? Molecularity is not equals to order of हायर reaction. ऑर्डर की दिखती है लेकिन वो हायर ऑर्डर की होती नहीं है. हाँ, molecularity is not equal to order means जो रिएक्शन देखने में तो हमें ऑर्डर्स का molecularity कुछ और आ रही है, number of molecules which are taking place in a reaction, but experimentally when we conduct the experiment for that particular reaction, then the order is different. So in the pseudo order reaction देखने में कुछ और result कुछ और आता है, ठीक है. Pseudo means dual nature. Okay, so there are certain reactions. For example, inversion of cane sugar, और अभी हमने जो reaction एक discuss किया था, that is the reaction between the ethyl acetate and the water, है ना. So in that case, in that reaction, we have seen that the ethyl acetate reacts with the water molecule and there is a formation of the acid and alcohol. और इस reaction में, when there was a formation of the acid and alcohol, it means that this reaction is an example for the pseudo order reaction. Here the molecularity of the reaction is 2 because ethyl acetate reacts with the water. तो यहाँ पर हमारे पास ethyl acetate भी है और water molecule भी है. The two molecules are taking place in a reaction. There is a collision between the two molecules. And but actually जो हमारा concentration में changes आ रहा है, that is only on the reactant which is taken in small amount. ठीक है. तो pseudo order reactions में जो हमारा experimental order होता है, that experimental order is not exactly, the order is not equal to the molecularity of the reactant. And in this case, the reactant which is taken in large amount, उसके respect में हम लोग order नहीं find out करते हैं. We find the order of reaction with respect to the reactant which is taken in a small amount. जो हमारा small amount पे reactant present है, उसी के concentration में changes आते हैं. भाई कोई भी चीज हमारे पास है, अगर large amount है and उससे अगर हमने थोड़ा सा small amount withdraw भी कर लिया, तो उसके amount में बहुत ज्यादा difference नहीं आता है. And if the substance is present in a very small amount और उससे हमने थोड़ा सा withdraw कर लिया, then its concentration changes. Okay, so that is the pseudo order reaction. And in this reaction, the reaction between the water and the ethyl acetate, the rate of reaction is studied with respect to the ethyl acetate which is taken in a small amount. Okay, so इतना क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? So for today, it's enough.
and जो देखा है तूने तो जाना है